Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. All my dear friends, you are just enjoying with us beautiful scenes during our morning walk after Fajr prayer and Darsul Quran. Actually, I wanted to send a message on Prime Minister of Bangladesh, Miss Hasina Wajid. The group of old and young people who comes daily in mosque and go for a morning walk in Frankfurt city. You see, these all are victims of Pakistan fanatic religious groups and government anti-Ahmadi laws. Now, I will like to say something to the Prime Minister of Bangladesh. You could feel this pain if you had lost your own son in such a brutal way. Some years ago, I heard one famous sentence from a judge in your country by sentencing a group of rapists to death. He said, "It is not Pakistan, but it is Bangladesh." Now, as a Prime Minister of Bangladesh, it is your responsibility to prove that this is not Pakistan, but Bangladesh. You know, on Friday afternoon, a young Ahmadi engineer, Shahid, was beaten to death just because he was attending a peaceful Ahmadiyya Jalsa gathering. This is very normal in Pakistan that these fanatic people who are taught by religious leaders, they say that Ahmadis are non-Muslims, so you have the right to kill them and attack them. But I have heard the Bangladesh government and protecting organizations like police and army are not on the same way like in Pakistan. I hope that you will bring these brutal people, these religious leaders or the people who are behind this killing to the justice. We are not living in a world where we can do everything hiding from the other world. So hopefully we will see very quick a good response and a good lesson for the Pakistan government as well. दोस्तों, आज सुबह की सैर जो कि रोज़ाना हम फ्रैंकफर्ट में करते हैं फजर की नमाज के बाद, उसके खूबसूरत मनाज़र के साथ साथ मेरे दिल में जो एक दर्द था, जो एक करब था, कल के वाक़या को देख के जो बांग्लादेश के अंदर जमात अहमदिया के जलसा के मौका पर जो मजहबी मुनाफरत वाले लोग, जिनको बाज़ लोग लीड करते हैं, गंदी जहनीत के मालिक, इस्लाम तो दूर की बात, वो तो इंसानियत की कदरों को भी नहीं जानते। इस्लाम के नाम पर उन्होंने कल जलसे पे हमला किया और बहुत सारे अहमदी नौजवानों बुज़ुर्गों को शदीद ज़ख्मी किया। उनमें से एक नौजवान जाहिद हसन, जिसको हम उर्दू में जाहिद हसन कहते हैं, वो शहीद हो गया। अब गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि चंद महीने पहले उनके एक जज ने एक अदालत में जब जो रेप करने वाला एक ग्रुप था, उसको सज़ाए मौत सुनाते हुए ये जुमला कहा कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश है। अब इस जुमले की लाज रखना
وہاں کے جو ادارے ہیں، جو وہاں کے جو پرائم منسٹر ہے یا پولیس کے ادارے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہم احمدیہ کمیونٹی پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پرامن کمیونٹی سمجھے جاتے ہیں۔ ہم یہ لوگ جو سیر کریں، یہ بھی پاکستان کے قانون کے کیا کہتے ہیں ستائے ہوئے یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے سب کو۔